Hello guys, welcome to the channel Physics. तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, बिल्कुल इसकी तरह ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है और इसके अराउंड मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, अगर सपोज इस पॉइंट पे मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी पॉइंट हो सकता है, मैं क्या करता हूँ, मेरे को पता है मुझे क्या बनाना पड़ता है, यहाँ पे गॉस लॉ में मुझे बनाना पड़ता है गॉसियन सरफेस। अब ध्यान से देखना कि गॉसियन सरफेस जो मैं सिलेक्ट करूंगा वो उसी शेप का होगा जिस शेप की बॉडी होगी। तो बॉडी अगर सिलेंड्रिकल शेप का है तो गॉसियन सरफेस भी कैसे लूंगा मैं, सिलेंड्रिकल शेप का। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक गॉसियन सरफेस। ये बन गया मेरा गॉसियन सरफेस, ये बन गया मेरा गॉसियन सरफेस, करेक्ट। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे अब निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए अब देखो गॉसियन सरफेस कैसे बना है। ये है इनफिनिटली चार्ज कंडक्टर और ये जो सरफेस बना है ये अपने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना है। अगर मैं सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाता हूं तो मुझे पता है फ्लक्स जो है वो कौन से साइड से निकलेगा। अभी फ्लक्स जो है सभी डायरेक्शन में निकलेगा, ऊपर से भी निकलेगा, साइड से भी निकलेगा, नीचे से भी निकलेगा। तो हम देखते हैं कि फ्लक्स जो है किस डायरेक्शन में निकलता है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो मुझे पता है कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इस बॉडी से मेरे को लगता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस डायरेक्शन में निकलेगा, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूं, मैं जो है पहले टोटल फ्लक्स देखता हूं। टोटल फ्लक्स निकालने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये जो है एक यूनिफॉर्म लॉन्ग वायर है और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मेरे को पता है, मेरे को लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूला से अपन ने ऑलरेडी लिख चुके हैं, लेकिन लीनियर चार्ज डेंसिटी के बदले में क्या लिख सकता हूँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी that is given by the symbol which is given by q by, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं इस कंडक्टर का लेंथ जो है वो n लेता हूं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड q, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया q बाई। अब मुझे क्या करना है, मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक total electric flux will be flux through the end surfaces plus flux through the curved surface, end surface से flux और curved surface, so it will be flux through end surface plus flux through curved surface. Now first what we will be doing is we will be calculating the flux through the end surface. तो पहले end surface से flux निकालते हैं, let us see what do we get. Flux through end surface, flux through end surface when we are calculating, we know the formula, flux ka formula we already know, flux can be written as es cos theta. Now if I consider a very small area here, this, if we consider this area as delta s, मैंने छोटा सा एरिया ले लिया, इसको मैंने बोल दिया डेल्टा s। अब एरिया वेक्टर मुझे पता है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट विल बी डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन। And electric field also you already know, electric field is directed in this direction. So can you tell me the angle between both of them, what will it be? Yes, the angle between both of them will be 90 degrees. So if it is 90, so I can write this here as E delta S cos. So it will be E delta S cos 90. Cos 90 comes out to be 0. So here the flux which will be getting will also be 0. The same will be applicable for this surface as well. So both the end surfaces will be getting it as 0, because here also if you take it as delta S, it is here, electric field is here, so it comes out to be 0. So now the total electric flux will be only the flux through the curved surface, right? Total electric flux will be flux through
curved surface. Now flux through curved surface, if I need to calculate, I will take a very small area and I'll consider this is delta S. So from delta S, we know that the area vector will be coming outwards. Since this will be the cylindrical surface, you take any area, it will be coming out perpendicularly outwards. And then you also know that electric field will also be coming like this. So the angle between both of them will be 0. So what will I be doing here is that I'll write flux through curved surface. Flux through curved surface, what will I write it as? E delta S cos. Since this is a very small flux for a very small area we are calculating, so we will write it as delta phi can be written as E delta S cos 0. Cos 0 comes out to be 1. Cos 0 which comes out to be 1. So delta phi will be E delta S. Now we need to calculate the total flux through the entire curved surface area. The total flux through the entire curved surface area. The total flux comes out to be summation of this small flux. So all small fluxes will be adding and we'll be getting the total flux through the curved surface. So when we add this, we'll get the total flux. This will be summation of E delta S. E is constant, it will be summation of delta S. This comes out to be delta S. I'll write this down here. So this becomes phi is equal to E. What does summation of delta S give me? Delta of S, delta S was small area. But अगर अपने को पूरा area चाहिए, so what do we get? The entire curved surface area. The entire curved surface area comes out to be 2 pi RL. It comes out to be 2 pi RL. Is this very clear? So now here we got the value for flux through the entire curved surface. The entire curved surface we already know. Flux through entire curved surface phi is equal to E 2 pi RL. And according to Gauss law, we already know phi can be written as Q by epsilon. Take this as equation number 1. We take this as equation number 2. Now we'll equate 1 and 2. Equating 1 and 2. We get this as 2 pi RL is equal to Q by epsilon. So E, when we are adjusting, what we will get? E is equal to 1 upon 2 pi epsilon naught. So here it is Q by R. Now since we already know that lambda can be written as Q by L, since it is charge per unit length, so we'll E is equal to 1 upon 2 pi epsilon naught. Q by L we are writing lambda by R. So this is the final formula for electric field at a point due to an infinitely long charged wire. I hope this is very clear to you all.